Who was playing captain for Arsenal if Odegaard wasn't playing? Arsenal fan doesn't know who the captain was for I wasn't Arsenal. watching the game, I was drunk. Arsenal fan chose to get drunk instead of watching Arsenal. Yeah, I chose live. Chose life instead of club. Oh wow. How much more can I go on? When was the last time you watched a United game at Old Trafford? When's the last time you went to Emirates? You can't talk smack about me if you haven't done it yourself. I've been to Old Trafford for United versus Arsenal How many times? once. And I saw United play Galatasaray in Turkey in a hostile atmosphere. Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. वेलकम बैक टू क्या पका रहा है. नहीं, डिडंट गेट स्कैर्ड. ठीक है, हमको यही लगा कि थोड़ा हैलोवीन है, कुछ थोड़ा और मस्ती करते हैं, ट्राई टू लाइटन द मूड. यूनाइटेड तो कुछ लाइटन नहीं करा, भारी दे रहा है हमको फीलिंग. सुनील को Like you see, no smiles today. नो स्माइल सुनील. और यहाँ पे यू कैन सी निर्वाण. प्लीज निर्वाण शोकेस व्हाट्स ऑन ईच चीक. MUFC best. क्योंकि वापस निर्वाण हार गया प्रेडिक्शन गेम. सम थिंग्स इन लाइफ आर सर्टेन. डेथ टैक्सेस. निर्वाण लूजिंग प्रेडिक्शन गेम. Oh, that's the fourth thing that you missed. व्हाट? United running out of budget because they're not selling the club. It was supposed to be United best of luck next year. But club के पास budget नहीं है तो United best पे ही छोड़ दिया. Good twist, but nice try. At least Nirvana is making us laugh more than United can, और vice versa. ठीक है यार, ये एपिसोड में ऑब्वियसली मैनचेस्टर डर्बी के बारे में बात करेंगे. टेन हाग, एल क्लासिको इज एल फार्सिको, बैलन डोर व्हिच इज फालन डोर. आई डोंट नो. El Clasico was pretty solid. एल क्लासिको एक्चुअली वाज प्रीटी सॉलिड. एक्चुअली बहुत टाइम के बाद After मजा a आया. long time, it was a good El Clasico. a long time के बाद बराबर है But एक्चुअली. a good other rivalry game, no, this weekend. I don't know what he's talking about. Anyway, सुनील तू चालू कर दे यार. तो जैसे तूने देखा स्क्रीनिंग में तो खुद आया था. आई थिंक पिछले 5 या 10 सालों में सिटी गेम के लिए लोएस्ट टर्नआउट होगा. अराउंड 120 पीपल केम. एंड मुझे कैरियोके जो मैंने कैंसिल कर दिया था, मुझे अनकैंसिल करना पड़ा ताकि बाहर का सेक्शन खाली नहीं लगे. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे खुद के फैंस को किसी को बिलीव ही नहीं था कि हम हराएंगे. एंड काफी एविडेंट था जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था पब में कि अराउंड काफी होपलेसनेस था. एंड वो पिच पे भी दिखा कि यार देयर वाज हार्डली एनी चांस. एक दो गोल था जो कर सकते थे. बट मैं बोलना चाहूंगा सिलेक्शन वाज, आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड. टेन हाग जिसने मैकटोमिनी, मैगवायर सबको साइडलाइन किया था, नाउ दे आर लाइक स्टार्टिंग ऑल द गेम्स. एंड वरान वाज ऑन द बेंच. Tactics. एंड माउंट वाज ऑन द बेंच. आई डोंट अंडरस्टैंड यार क्या चल रहा है. मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग, वो गंदा वाला फीलिंग आ रहा है जहाँ पे टेन हाग इज sabotaging himself, trying to get sacked. It's tactics. खुश. मतलब वो ओले के टाइम पे भी वो फीलिंग आया था, जोजे के टाइम पे भी फीलिंग आया था, जहाँ पे मैनेजर गिव अप कर देता है एंड he tries to go against the board या try to signal something. तो वो वाला फीलिंग आ रहा है. निर्वाण यार रोपिंग इन ओले का नाम बोल दिया ना, तो गेम के बारे में छोड़ ही दो. फर्स्ट हाफ ही वर गुड, सेकंड हाफ ही वाज ट्राइंग टू बी ब्रेव. Hey, but for We once, lost. I'll say something positive about United. Onana. Onana. He knows how to save the ball. We lost momentum second half. ठीक है, Onana was great. He could have kept. We could have lost way worse. मतलब और ही गांड फाड़ देते हमारी, बट नहीं हुआ. ठीक है. ओले के बारे में सुनील ने बोला. निर्वाण यू कैन चाइम इन हियर बिकॉज आर्टेटा के बारे में हमने बात किया था व्हेन थिंग्स वर लुकिंग रॉकी a year and a half back. Both of us personally had a discussion over half an hour. ठीक है. Multiple of them, and we were actually the only people in a room full of people who were like Arteta should stay. बाकी सब लोग बोलते निकाल के और किसी और को लेके आओ. ठीक है. सुनील ओले के टाइम हमने वीडियो निकाला था फुटबॉल फंडर्स के टाइम. यू गॉट वेरी एंग्री विद मी तभी कि तू क्यों निकाल रहा है ऐसा. मैंने क्या बोला कि इट्स नॉट माय पर्सनल ओपिनियन बट द फैंस विल इवेंचुअली मेक इट हैपन. सेम थिंग आई एम सेइंग राइट नाउ. टेन हाग के साथ ही टेन हाग मेड मिस्टेक्स इन द गेम. गाइस बिल्कुल नहीं बोल रहे कि टेन हाग ने मिस्टेक्स नहीं किया है, बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट what the board wants is for everyone to turn against the Ten Hag again. वापस पूरा फोकस हट जाएगा टेक ओवर से, बोर्ड से. Then they will come out and say now new manager, refocus your goals, try to make it into top 4. Rinse, repeat, वही चलेगा. Give a manager 3-4 years, plummet to 10th in the table, plummet to 12th in the table यार. लेकिन there is no way we can finally grow if we don't take a few hard hits. Do one thing. What you go down to basics is why you support a manager. तो मैनेजर को क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि उसका समथिंग अबाउट हिम अच्छा लगता है. फॉरगेट नाउ जो भी हो रहा है आप लोग का बहुत मूविंग पार्ट्स है उसके माहौल में. यू कांट पिन पॉइंट सर्टेन इश्यूज, बट जब ही आया था
तुम लोग को क्या लगा था कि टेन हाग आएगा तो व्हाट इज गुड अबाउट टेन हाग? व्हाट डिड यू नहीं, फाइंड जस्ट लाइक लास्ट सीजन कम से कम थोड़ा फाइट तो होना चाहिए यार। व्हेन नहीं, पिच पे उसके फाइट उसके नहीं उसके दिखता क्लब तो ज्वाइन करने के पहले ही क्या है उसके बारे में अच्छा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन आई थॉट विल एटलीस्ट एन एक स्टाइल ऑफ प्ले होगा जो अगेन दिख नहीं रहा है। आई थिंक हमारा जो लाइक लास्ट वीडियो आई सेड कि हमारा साइनिंग्स आर नॉट असिस्टिंग द टीम विच वाज लास्ट ईयर, एंड टीम को आगे नहीं लेके जा रहा है बट के और हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहा है। तो बहुत बट लोग गारंटी क्या है कि ऑल द साइनिंग्स आर 10x साइनिंग्स एंड हाँ नॉट द वो तो बोर्ड हाफ एंड डिबेटेबल हाफ। है, वो डिबेटेबल है यार। मेरे को एक दो लोग बोल रहे थे कि ये सब उसके साइनिंग्स है, बट जहाँ पे प्लेयर्स लोन पे आ रहे हैं, फ्री में आ रहे हैं, बट आई एम यूनाइटेड श्योर का दीस तो आर आफ्टर नॉट द फर्गुसन फर्स्ट देयर वाज चॉइसेस। नेवर अ मैनेजर हु मेड अ साइनिंग ना. No, so look, there's a two ways of looking at this. Under Sir Alex Ferguson, Glazers had given Sir Alex Ferguson and David Gill full reign because they were a competent, trustworthy team, and if it ain't broke, why fix it? Okay? Yeah. After they left, United tried to replicate it. Not to credit Glazers, how to say that word. उनको क्या लगा कि हम क्यों हाथ लगाए, हमको पैसा आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, क्लब पैसा बना रहा है, मैनेजर को आने दो, हाई प्रोफाइल प्लेयर साइन करने दो, थोड़ा पिवट करेंगे अभी. सो एलेक्स चला गया. He was a hard at. He would not sign any high profile players who would come and disrupt the dressing room. देख अभी कमर्शियल वैल्यू प्लेयर आते हैं, टिकट सेल्स बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, तो दे डिड दैट. ओके ठीक है, दे गिव मैनेजर्स फ्री रेन फॉर दैट. बट इन अ बिग क्लब, ठीक है, एंड पीपल आर लाइक अरे इसमें भी ग्लेजर्स को ब्लेम करते हो, देखिए मैनेजर फ्री रेन. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. A manager cannot have the responsibility on his head of deciding transfer fees and having an incompetent negotiation team. वो तो बोलता है निर्वाण मेरे को please you get all of this for me. You tell me what Annie, I can't get your pepperoni pizza and this much price. I can only give you this much and this much price. It is his job to tell me what he can do in my budget. Yeah. अभी वो तो मैं इसको कुछ ही बोल दूंगा, मुझे लेके आएगा, फिर बोलेगा अभी ये बिल है, अभी बोलेगा fuck मैं डेट में चला गया. I'm like I don't want all of this. ले तूने तो मुझे बोला I got it for you at all cost. Who is telling Ten Hag this? That we can't get to these players. Who told Ole this that we can't get to these players? फिर ना बोलने के बाद यू गॉट इन रोनाल्डो एट 500-600K. आई डोंट नो. सुनिए मेरा प्रॉब्लम वही है, यू आर राइट, नो स्टाइल ऑफ प्ले. बट इफ द प्लेयर्स कीप डाउनिंग टू टाइम एंड टाइम अगेन, तो ये प्लेयर्स है कौन इतने की वी हैव टू सपोर्ट दिस प्लेयर्स ओवर अ मैनेजर. आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैनेजर इज अनटचेबल. उसने बहुत ही घटिया सब्स्टिट्यूशन किया लास्ट गेम में. फुल ब्लेम शुड बी ऑन हिम फॉर दैट. Yes, out of 16 players, by the way, he signed. Guys, in your mind right now, end of the video, I'll come back to them. Ten Hag has signed 16 players under his time, ठीक है? Not him personally, but under him, there will be 16 signings. अभी कितने In 2 हो? years, 16 In a year and a half. And when I read the trip, I made a list of these players and yeah, I understand it. लेकिन look at the quality of those players. अरे but वो Ten Hag के players थे. दिखा मुझे. Don't random get me a BR article, ये article and give me the चूचा पे. बहुत हो गया तुम लोग का अभी fans का. If you either decide to be patient or you decide that you want to be part of this cycle की rinse repeat होगा, club will get away. अरे हम लोग को Zidane आएगा, ये आएगा. Look at Sunil's face. हाँ, मैं इतना बड़ा तेरा मोनोलॉग सुन रहा था. See, मुझे तो ऑलरेडी दिख रहा है यार. सैडली इट्स हैपनिंग एंड आई विल टेल यू द एग्जैक्ट टाइम आल्सो. आई थिंक व्हेन वी प्ले लिवरपूल अवे, उसके पहले वी आर Champions League के बाद. प्लेइंग, वी आर प्लेइंग बायर्न. तो मेरे को लगता है इफ वी गेट आउट ऑफ चैंपियंस लीग, इफ वी लूज टू लिवरपूल अवे, हो जाएगा. बट फॉर अ चेंज आई होप फैंस, आई हैव ऑलरेडी सीन, मेरे को एक दो मैसेजेस आ रहे हैं पब्लिक मेरे को डीएम करके बोल रही है चूते मैनेजर को आप बैक नहीं कर सकते. चूते मैनेजर ऑलरेडी. तो आई डोंट नो, मतलब आई कैन ऑलरेडी सी इट हैपनिंग, बट आई होप दिस टाइम फैंस स्टिक टू द मैनेजर एंड जो वर्ड अपना जो दिया था कि इस बार नहीं मैनेजर हैज टू, उनको टाइम मिलना चाहिए. तो आई थिंक वो उससे स्टिक करे तो अच्छा है. अच्छा, बिकॉज Ten Hag अच्छा सोशल मीडिया पे एक फ्रेंजी बन जाता है कि जिसको वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है. According to you, Ten Hag अच्छा क्या कर रहा है? At least let the fans see something positive. To आई support. थिंक वो प्लेयर पावर को थोड़ा रोक रहा था, जो प्लेयर का पॉलिटिक्स बन जाता है वो थोड़ा रोक Which is रहा था. very big for United. एंड फर्स्ट सीजन में तो एटलीस्ट एक स्टाइल ऑफ प्ले दिख रहा था. एंड अगेन आई विल लाइक टू रिमाइंड एवरीवन के एक बैक फोर हमारा कंप्लीटली गायब है. मार्टिनेज नहीं है जिससे बहुत फर्क गिरता है, लुकशॉ नहीं है, वैन बेसाका नहीं है. तो वो बैक फोर जो लास्ट ईयर खेल रहा था वो कंप्लीटली नहीं है. आई स्टिल सजेस्ट थोड़ा टाइम दो, मगर अनफॉर्चुनेटली टाइम इज रनिंग आउट बिकॉज वी आर प्लेइंग न्यूकासल इन कप गेम और चैंपियन लीग में एटलीस्ट ग्रुप स्टेज तो पार करना मेरे को लगता है मस्ट है. वी डोंट डू दैट देन ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आ जाएगा. तो लेट्स सी. बट मेरा प्रेडिक्शन है दिसंबर, इफ वी कैन गेट पास दिसंबर देन. नहीं ठीक है But यार. don't you think football is cyclical? हाँ वही तो है ना. नीचे तो हमारा- जाना जरूरी है. You बट can't ये always be up. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये साइकिल को तोड़े कि फायरिंग मैनेजर, चेंजिंग नैरेटिव, चेंजिंग But the club also पीआर. needs to build its coffers. मेरे को तो वही लगता है कि इफ ऑनेस्टली मेरे हिसाब से भले मैनेजर का कुछ भी फेट हो, यार क्लब का क्या फेट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है. मुझे लगता है
Glazer रहेंगे नहीं रहेंगे, partial sell करेंगे, जो भी है, why don't you just finish it off and tell everyone, एक clarity हो जाए, so that everyone knows कि this is the thing now, this is going to remain. मेरे को लगता है clarity होना बहुत जरूरी है. अभी जो chaos जो चल रहा है वो doesn't help anyone. I'm sure club में भी lot of people are wondering उनका job safe है कि नहीं. Doesn't help anyone. Nirvan, two owners in the past, right? You had Glazers fighting over, and before that, who did you buy over Major? It's been so long. आर्सेनल के साथ यही हुआ था, where there were minority stake owners, then one bullet the other out, ठीक है? What do you think will happen when we have a partial takeover and So what happened at Arsenal few years back was great, right? हम लोग का क्या हुआ? There was a phase where we wanted to recover our losses. We built the Emirates. We had a lot of money. What Wenger did was, with the limited resources available to him, kept the manager, the owners also happy, kept the fans not happy, but we were not falling out of Champions League. We were not falling out of top 4. We were reaching quarters. We reached in the finals of Champions League. Finished second, finished third. You are still a big club. The silverware may not have come, but जो क्लब का ऑरा था वो बिग क्लब ऑरा था. Where you are afraid of playing Arsenal because Arsenal is a top squad. You may not be afraid of Arsenal contending for the title, but you're still happy that you are considered a great. You're not a laughing stock. At the same time, the club was building, the owners were building confidence ki as a business, because owners ke liye kya? It's a business. So as a business also, this is viable. The fans are also happy. You reach that level of momentum and say, चल अभी confidence आ गया. अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं. थोड़ा coffer बन गया, and that's now right now where, you know, they made that entire board with Edu and Arteta and I forget the Indian guy's name who just is resigning. no, I don't remember. The CFO. All of them together brought this confidence in saying मैं तेरे को support करता हूँ, मैं तेरे को support करता हूँ, मैं तेरे को support करता हूँ, मैं तेरे को support करता हूँ. In whatever way I can, I will support you. And then there's this cohesive unit that is not only working towards the gain for the monetary aspect for the owners, but same time में fans को भी खुश रख रहे हैं. एक मैं academy इसलिए वो बोलना चाह रहा था कि fans are not happy ना. जैसा last video में बोला कि fan, you can see fans getting disgruntled. because we were happy And to in see. like 20 years of following United, I have never gone into a game with no hope at all. Like Yeah. कोई hope ही नहीं था. Result is very इसने मुझे obvious. मैसेज किया before the You're game just waiting for the inevitable to कि मुझे बोला any hope. I said no. हालांड को जो struggle कर रहा है गोल के सामने, as in he's struggling, as in he's still before this game had 9 goals in the Premier League, but by his last year standards, I said United is going to be Robin Hood. They will get Haaland back into form. 20%. He'll get Haaland back into form, and we gifted him that goal. मतलब इतना shocking था. जैसा निर्वाण बोल रहा है कि फुटबॉल गोज इन साइकिल्स एंड हमारा कोई गॉड गिवन राइट नहीं कि हम हमेशा जीतते रहे. वी आर ओके इफ यू आर लूजिंग, बट व्हाट वी आर नॉट ओके विद इज नॉट गिविंग अ फाइट. कंपेरेटिव भी नहीं होना, कोई चांस भी नहीं You know होना. what? I think for मतलब वो comparing United and हेल्पलेसनेस मुझे Arsenal, फील हो रहा है अभी. comparing United and Arsenal, I think जो वो fact था ना, where that positivity comes up, where one owner catches the hand of the CFO, catches the hand of the director of football, catches the hand of the manager, and says we're doing this program together. एग्जैक्टली At मुझे least fans believe को नहीं हो मालूम रहा है है कि कि ये मैनचेस्टर सिटी के लॉस के अपन बाद relegate भी हो गए ना, तो we'll support these guys because they have a plan. वो Glazer I family think में right now you all don't have a plan. You all don't have. No, because like I told you, they don't want to have a plan. They want to keep making money अभी, and they were like, अरे हम लोग सब ठीक हो जाएगा ना. We are giving the manager money. लेकिन structure चाहिए top to bottom. ठीक है. Look, I don't want to go back into the monologue. हाँ एनीवेज सूर्य को वो करना था एक. ठीक है. काफी We'll move on from this. Everyone has a right to their opinion. ठीक है. I'm angry also. Tomorrow as a fan, it's your opinion. You want Eric Ten Hag out. ठीक है. You think he's sucky. There are better managers to come in. ठीक है. I humbly disagree, and I think these opinions are part of the problem. But it is your right to this opinion. Nirvan, move on to थोड़ा better times. Something scarier than United sucking. Spurs on top of the table. Bro, happy Halloween, guys. Happy Halloween, but Halloween starts and ends on 31st October. Tomorrow is 1st November. Or I think when the video comes out tomorrow, नहीं आज ही डालेंगे Halloween ठीक है. पे. तो Halloween is over. बस अभी खत्म करें स्पर्स का ये पागल. मुझे लग रहा है अभी स्पर्स का डिफिकल्ट पीरियड अभी चालू होगा. ऑफ कोर्स पैलेस अवे भी इजी नहीं है. दे हैव वन. No, but they look vulnerable against Palace also. I think Palace ने काफी attacking football खेला. Got a few chances. Vicario, I think, kept them in the game. But I think a big team can put a dent. हाँ तो आई थिंक ये वीकेंड को दे आर प्लेइंग चेल्सी. तो आई थिंक वो गेम जीतना वुड प्रोबब्ली गिव अस अ गुड सिग्नल कि स्पर्स ये अपना लीड मेंटेन करने वाला है कि नहीं. मुझे वही लगा कि यार अगेन दिस इज Pochettino. Guys, don't forget big emotional moment. Pochettino going back to Pochettino playing against Spurs, where he's kind of not
said anything bad about Spurs, but indirectly ऐसे press में बहुत बार बोला कि I'm come to proper club and ये वो. I think Spurs fans are not going to be as warm as he thinks they're going to be to him. ठीक है, they won't be hating on him because at the end of the day they still got the best period of football थोड़ा under him. What I like and what I fear as a United fan, even if we kick back into form, Spurs don't look like they're dropping points that soon unless they pull a Spurs and Alok जो बोलता है Spursy, unless they do something Spursy, because on paper right now Spurs Chelsea tough game for Spurs also, but Chelsea कुछ खास कर रहा नहीं है. Again Palmer, Sterling, Jackson के बीच में there were so many chances they could have easily beaten Brentford, लेकिन अभी वो है नहीं, confidence नहीं आ रहा है. It is ripe for Spurs to come and smash the Chelsea side. Because That's what they'll we said want to about prove. Arsenal also, but then Mudryk does what he does. मैं वही बोला, right? That was a shocking result. Now, unless Chelsea in that game didn't do enough to win the game at all, but they took the slice of luck that they got in the penalty and in that goal. Arsenal came back. मुझे वही लगता है. सुनिए, what do you think about Spurs? Actually, लगता है कि if United come back, Spurs will still be in the top four in the end of the season and we will miss out because of our poor start. मगर देख अभी तक तो अच्छा ही खेला है, बट मुझे नवंबर दिसंबर एंड जस्ट स्टार्ट ऑफ जनवरी, ये जो फेस्टिव टाइम होता है जहाँ पे बहुत सारे गेम्स आते हैं, आई थिंक दैट विल डिफाइन. स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई एम हैप्पी स्पर्स आर अबाउट आर्सेनल For now. फॉर नाउ. तो मुझे लगता है, but guys, end of the day, यूनाइटेड खुश हो रहा है कि स्पर्स इज अबव आर्सेनल. मतलब Yes. कितने बुरे टाइम आ गए. क्या बेस्ट लिखवा है. हम लोग सालों से ये बेस्ट लिखवा है. खुद को अंदर से भी फेथ नहीं है कि MUFC बेस्ट है. नहीं, do you all think Spurs are genuine title challengers? I see what I Too said early- about too Arsenal. early for me. What I said about Arsenal last week, I feel the same about Spurs, that they have 4 players, and it lies on Richarlison, Maddison, Son, and Vicario on goal. हाँ टू अर्ली वैसे भी. The others are there, but it totally depends on how much you can exploit these 4, because उनके result इन तीनों से ही आ रहे हैं, चारों से ही आ रहे हैं. और वैसे भी आई थिंक द लिटमस टेस्ट इज अभी तो हैलोवीन में दे आर टॉप, क्रिसमस तक टॉप रहते हैं कि नहीं, दैट विल सी. Boxing Day we shall discuss this. ठीक है, चलो Spurs fans, hopefully it continues for you. Best of luck for this season. Guys, moving on, थोड़ा out of Premier League. No, that's from these two. Fuck you. I'm trying to be decent. Moving on, Premier League से थोड़ा El Clasico. नहीं इसके आर्सेनल का भी पूछ ले. नहीं, थोड़ा मस्ती कर रहा था. Bro, Arsenal का जब भी पूछना है पूछ ले, उसके पहले ठीक यूनाइटेड है, डिस्कस before कर लेना. नहीं उसके पहले हम जाएंगे. निर्वाण, Arsenal strength to strength, like we predicted last game week कि Arsenal will smash Sheffield United the way a decent Premier League team playing football should smash Sheffield United, not United 2-1 should, struggle. ठीक है, clinical game. Rotation, rested Odegaard, rested Gabriel. It was very clear. He said these players have played too many minutes. Yeah. तो to your point, निर्वाण, मैं तूने बोला last week कि यार तुम लोग के पास squad depth है. I feel तुम लोग rotate कर सकते हो. Chelsea was a blip. How do you feel after that game? Looking at that game. Yes, it was last Sheffield, but जो भी है. Resting players and relegation team 5-0 win is definitely a confidence booster after the last few weeks of ups and downs. A solid 5-0 with a hat-trick from our striker. I think वो काफी positive vibes देता है. एनकेटिया हाँ मुझे भी पसंद है एनकेटिया. Bro, and the best part is उसने 3 completely अलग गोल मारे. First goal, cross into the box, control, finish. Second goal, poach on a parry. Third goal, fucking top corner from outside the box. तो उसने उसका range दिखा दिया है. I think mature हो जाएगा तो he's a good player. But he's a proper striker. So we'll have to adjust. देखो Odegaard नहीं था तो Saka Odegaard couldn't do their little romancing on the right wing. And that opened up a different style of play. With ESR, with Havertz, it opened up a little more traditional way of playing as opposed to us relying on the wing and the flair on the wings and all. It was involved the striker a little more and not just given the final pass. And I think that's positive for us because at least we know that there is another way of playing that we can do if something happens, if we have to rest someone, God forbid someone gets injured. हमारे पास 2 या 3 options है of how we can play to still get the result. नहीं लास्ट सीजन भी एनकेटिया काफी क्रूशियल गोल्स Yeah, मारता yeah, था. and he- उसके गोल्स के बिना आर्सेनल वो टाइटल जीतने के लिए उसका गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट. Very important. Very, and he has a good striker's mentality. I think he's still a little young. थोड़ा अगर वो refinement आ जाएगा, he plays more minutes with this team. I think he can benefit from it. So I'm very positive. Of course, the Vieira penalty was great. The Tomiyasu scoring after 50 games. Like there were multiple just confidence मुद्दे की boosters. बात. If you play Liverpool tomorrow, will you smash them? They're just 2 points behind you, 1 point behind you.
I think it'll be a good game. लिवरपूल अभी स्नीकली जीत रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। That's what I think. It'll be a good game. I think it'll be a good game. It'll come down to who takes the chances. Because City, yes, City could have scored against you all. They had their chances, but you all saw a tough period. Took Yeah. your win. Not smash and grab, but you took your win, ठीक है? Yeah. तो technically, I feel कि your Spurs का game तो different over there. Liverpool is a game where you end up doing well, but sometimes you get smashed by them. Yeah, that's what I'm saying. Liverpool game, I think it'll be a nice game. It only depends on who takes the chances better and more clinically. Whoever converts, I think it's down to whoever converts at that moment. Because both teams create good chances. Both teams have quick wings. I mean, our playing style, I wouldn't say is similar, but our reliance on the areas of the pitch काफी similar है. तो जो बॉल अंदर गया वो नेट के बैक को हिट किया जिसका it's in their favor, I feel. So truly scary times, public. United could really shockingly not even make top 6, top 7 the way are going. Sunil fears कि यार United or Ten Hag might be sacked after a poor showing. क्या लिखवाया मेरे मुंह पे? MUFC best. That's what you feel, na, Indian That's what you feel inside, na, wishful thinking. ठीक है? MUFC, best of luck next year.